This call is now being recorded. Okay. So our first unit is classification of system, classification of signals and systems. Okay. So first of all, we will see what is mean by signal. Signal मतलब क्या होता है? Signal may be a function of time, temperature, position, pressure, distance, etc. Okay, so a function of one or more independent variables which contain some information is called as signal. So, what is the definition of signal? Any function. Okay, any function of one or more independent variables. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग मैसेज सेंड कर रहे हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर. ठीक है, तो क्या दे रहे हैं हम लोग उसको? सिग्नल दे रहे हैं. ठीक है, सो एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर शेयरिंग इज नोन एज सिग्नल. सो अ सिग्नल मे बी अ फंक्शन ऑफ टाइम, टेम्परेचर, position, distance, pressure, means any function that can be performed on any of these वेरिएबल्स, जैसे कि टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, पोजीशन हो गया, डिस्टेंस हो गया. ठीक है, कोई भी फंक्शन ये वेरिएबल पे जो परफॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सिग्नल बोलेंगे. सो बाय डेफिनेशन वी कैन से अ फंक्शन ऑफ one or more independent variable which contains some information is called a or is called as a signal. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्नल. ये बाद में लिख लेना सिग्नल का डेफिनेशन. यू हैव टू मेक वन कॉपी फॉर दिस सब्जेक्ट सिग्नल एंड सिस्टम्स. ओके, एज आई हैव टोल्ड यू ऑन प्रीवियस लेक्चर दैट दिस इज अ मैथमेटिकल सब्जेक्ट. ठीक है, इसमें डेरिवेशंस रहेंगे. दिस इज नॉट थियोरेटिकल सब्जेक्ट, सो यू हैव टू मेक अ कॉपी फॉर दिस सब्जेक्ट. ठीक है, आज नहीं होगी तो कहीं पेज पे लिख लो या फिर कोई कॉपी में लिख लो, लेकिन यू हैव टू मेक नोट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट. ठीक है, मैं टाइम भले ही मैं ऐसे टाइम दूंगी तो तुम लिखोगे, ऐसी पोस्ट ये सारे नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगी तुम लोगों को, बट यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स. ठीक है, नहीं तो फिर तुम लोगों को याद नहीं रहेगा कुछ. ओके, सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सिग्नल इन इलेक्ट्रिक सेंस? ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक सेंस में बात करते हैं, अ सिग्नल मे बी अ व्हाट? वोल्टेज और करंट. ठीक है, सिग्नल एक ही टाइप का नहीं होता. ठीक है, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सिग्नल. सो इन व्हेन वी टॉक अबाउट इन द इलेक्ट्रिक सेंस, अ सिग्नल कैन बी वोल्टेज और करंट. देन इन डेली लाइफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर, इन डेली लाइफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कौन कौन से रहते हैं? कैन एनीवन टेल मी? आदित्य, आकाश. इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इन डेली लाइफ.
What are the examples of electric signals? Antenna. Yes, yes. Pardon. Repeat again. Antenna. Okay, antenna. Yes. Antennas means TV signals. Okay, correct. TV signals or antenna signals. Then computer signals. मैम पूरा ब्लर आ रहा है। ब्लर तुम्हारा नेटवर्क नहीं होगा फिर। सबको ब्लर दिख रहा है क्या, कि सिर्फ एक को दिख रहा है? किस किस को ब्लर दिख रहा है? सबको दिख रहा है या किसी एक को दिख रहा है? किसी एक को दिख रहा है, इसका मतलब उसका नेटवर्क नहीं है बराबर। ठीक है, तुमको माइक अगर अनम्यूट नहीं करना है तो यू कैन मैसेज। ठीक है, वहां पे इन कॉल मैसेजेस का ऑप्शन रहता है, वहां पे मैसेज किया करो अगर मैं कुछ पूछ रही हूँ तो। सबको ब्लर दिख रहा है क्या, कि क्लियर है स्क्रीन सबको? अगर क्लियर सबको ब्लर दिख रहा है, हाँ क्लियर क्लियर है मैम। हाँ, तो फिर जिसको ब्लर दिख रहा है उसका नेटवर्क इशू है। ठीक है, मैं ये नोट्स प्रोवाइड करूंगी तुम लोगों को, सो डोंट वरी। ठीक है, बट क्लास में भी तुमको नोट्स बनाते चलना है, क्योंकि फिर अलग से तुम टाइम नहीं दोगे, मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को कितने सब्जेक्ट है अभी? 6 सब्जेक्ट है। ठीक है, 6 सब्जेक्ट का पढ़ना है, फिर 5 सब्जेक्ट्स, 5 लेक्चर्स होंगे तुम लोगों के दिन में, फिर उसके बाद अलग से तुम इसके नोट्स लिखोगे। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, सो जब क्लास रहेगी तभी सबको नोट्स लिखने हैं। ठीक है। So in daily life, electric signals are TV signals, computer signals, etc. Then many of the signals are generated signals. ठीक है, बहुत सारे सिग्नल, अलग सिग्नल्स क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। सो सिग्नल कैन बी one dimensional or multi-dimensional. When function depends on single variable, the signal is said to be dimensional or one dimensional. ठीक है, मतलब एक ही, एक मिनट, मतलब कोई भी फंक्शन अगर एक ही वेरिएबल पे डिपेंड है या फिर एक ही फंक्शन पे डिपेंड है, ठीक है, तो उसको क्या, कोई भी फंक्शन अगर एक ही वेरिएबल पे डिपेंड है, सो इट कैन बी से एज, it can be called as dimensional, okay, or one dimensional. And multi-dimensional मतलब क्या? When a function of two or more independent variables, मतलब अगर 2-3 वेरिएबल्स है हमारे पास अलग अलग और फंक्शन उस पर वर्क कर रहा है, सो इट कैन बी नोन एज मल्टी डायमेंशनल सिग्नल। ठीक है, ठीक है, मेनी ऑफ द सिग्नल्स आर जनरेटेड सिग्नल्स। देन द सिग्नल्स कैन बी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। वैसे तो और अलग अलग टाइप्स है, बट हियर signals are, or signals can be one dimensional or multi-dimensional। ठीक है, कौन कौन से? वन डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल। सो व्हेन वी कॉल्ड इट एज अ वन डायमेंशनल सिग्नल, व्हेन फंक्शन, कब कहेंगे हम कि वो वन डायमेंशनल है? व्हेन फंक्शन
depends on a single signal or single variable, sorry, not signal, variable. When function depends on a single variable, the signal is said to be one dimensional. Okay, so what are the examples of one dimensional signal? For example, sinusoidal सिग्नल, ये भी हमको आगे देखना है. साइनोसॉइडल सिग्नल मतलब क्या है, ठीक है. स्टेप सिग्नल मतलब क्या है, यूनिट स्टेप सिग्नल मतलब क्या है. सो वी विल सी दिस as we further proceed. Okay, then speed signal, whose speed signal मतलब क्या, whose value depends on time. Sinusoidal signal, then speed signal matlab whose value depends on time. So these are the some examples of one dimensional signal. Okay, now what about multidimensional? So when a function depends, when a function of two or more independent variable contains some information is called as multidimensional signal. Okay, so these are the definitions of dimensional, multidimensional, then signal. Okay, so examples of multidimensional signals are image signal. Why image signal? Because it is a two-dimensional signal with horizontal and vertical coordinates. Okay, so image signal is an example of multidimensional signal. Reason because it is a two-dimensional signal with horizontal and vertical coordinate. Okay, so what we have seen, first of all, we have seen the definition of signal. So signal may be a function of time, temperature, position, distance. These are all the variables. Okay, जैसे time हो गया, pressure हो गया, temperature हो गया. So these are the variables. Okay, then a function of one or more independent variables which contain some information. This is the basic definition of signal. What? A function of one or more independent variables which contains some information is called as a signal. ठीक है, then हमने examples देखे. जैसे in electric sense, voltage or current is a these are the examples of electrical signals. Okay, in daily life, the examples of electrical signals are computer signals, TV signals, antenna signals, etc. Then after this, we have seen one dimensional
सिग्नल एंड मल्टी डायमेंशनल सिग्नल। ठीक है, सो इतना तुम लोग अभी ये कॉपी में लिख लो। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।